morning, and this is from Lal Kakra Beach near Digha. This is early in the morning. Today the sky is overcast, so I can't show you the real beauty of this seaside. As you can see, this sea is totally isolated and it's not that crowded like Digha or Mandarmani. And during this time, the sea has come. There are few homestays and hotels, as you can see over there. So we are taking our morning walk on the sea beach. That's a nice idea for both of us. As we are going through the beach, we came across the fish drying process. ये जो मछली है, कल रात को इन लोगों ने मछली को पकड़ के सी शोर में लाया और इसके बाद इसको नेचुरल प्रोसेस में ड्राइंग के लिए ले जाएंगे. As you can see, all these fishes have been laid over the sand area and it will be dried in the sun, and once it is dried in the sun it will be powdered in a machine like this, grinded in a machine and fill up in sacks. अभी भूख लग गया, so let's go and prepare our breakfast. आज की मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पिज़्ज़ा होगा, तो उसके लिए I have procured pizza bread, pizza sauce, some vegetables, butter and pizza cheese. So it will be a wholesome breakfast. तो पिज़्ज़ा बनाएंगे हम लोग और एकदम पिज़्ज़ा ब्रेड लेके आया, वो चीज़ और ज़्यादा कुछ खर्च नहीं है, लेकिन एक अच्छा ब्रेकफास्ट बन जाएगा आपके लिए. ছুরি আনোনি তুমি? কেন গো? ও ব্রাশে মাখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, সুন্দর. The place is ideal for cooking purpose and they are quite generous that they have given us this place to cook. Our idea was to cook by the side of the beach, but nowadays they are not allowing to cook beside your beach due to coastal regulation act. So it's better to do your cooking in a safe area. तो ब्रेड में पिज़्ज़ा सॉस, टोमेटो सॉस दोनों को अच्छा करके स्प्रेड कर देंगे. उसके बाद जो वेजिटेबल्स पहले काट किया था उसको भी इसमें इक्वली स्प्रेड कर देंगे, देखने में सुंदर भी लगेगा. और वी हैव ब्रॉट आवर चीज़ फ्रॉम होम ऑल्सो. सो नाउ बिफोर स्प्रेडिंग द चीज़ वी विल ऐड सम चिली फ्लेक्स एंड पिज़्ज़ा सीजनिंग भी इसमें ऐड कर देंगे. सो वी हैव एडेड बोथ चिली फ्लेक्स एंड पिज़्ज़ा सीजनिंग. इट कैन बी गिवन आफ्टर बेकिंग द पिज़्ज़ा ऑल्सो. नाउ वी आर एडिंग द cheese and these are all grated cheese, so no grating is required, and give a good cheese topping so that it becomes tasty. After spreading this, I will ask to cook in a frying pan at a very low flame, otherwise the bread will get burnt. And remember to give some butter on that particular plate. Now the pizza has been prepared. Let's taste it, how it tastes. Oh, lovely. And you can hear the crispy noise of this pizza, and the cheese has been melted perfectly. Thank you very much, and don't forget to like and subscribe our video.